अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जो प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की हैं वो हम डिस्कस करते हैं अंडर टू हेडिंग्स। वी डिस्कस देम अंडर टू हेडिंग्स। वन इज फिजिकल properties and chemical properties. Second one are chemical properties. ठीक है, so the properties of acids, they are discussed under two headings, one physical properties and the second chemical properties. So far these physical properties are concerned, acids have following physical properties. First one is acids are sour in taste. एसिड्स आर सुअर इन टेस्ट। तो जब भी हम एसिड्स का अगर हम टेस्ट चेक करेंगे उसका, तो दे आर ऑलवेज सुअर इन टेस्ट। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज एसिड्स टर्न blue litmus to red. Blue litmus to red. This is the second property of एसिड। जब भी हम एसिड जो लिटमस पेपर होता है, जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर किसी भी एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, एंड दैट टर्न्स इनटू रेड कलर। बाय दैट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट इट इज एन एसिड। सो when a blue litmus paper is put into a substance, and if its color changes to red, then we say it is acidic in nature. This is the second property. Then the third property, acids, they are generally corrosive in nature. Acids are corrosive in nature. ठीक है, that means acids जो है वो corrosive in nature, they cause corrosion. ठीक है, मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस पे ये पड़ता है एसिड, तो उसको वो कोरोड करता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज एसिड्स आर जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स। They are electrolytes. What do we mean by electrolytes? Electrolytes are those substances which ionize in water. When we put them into a water, they get ionized. And they form cations and anions. Yelite acids acids trawan waters mas ionized gasan. Ionized matlab gasan go, they get broken down into cations, they form anions. ठीक है, cations भी form करते हैं और anions भी form करते हैं. Due to this property, they are good conductors of electricity. So they conduct electricity. Fifth property is in aqueous medium. Acids conduct electricity. And this property is because they get ionized in aqueous medium and they form cations and anions. ठीक है, these are the physical properties of acids. So then the second heading is the chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें पहले इसमें ये है रिएक्शन विथ मेटल्स। जब भी कोई एसिड रिएक्शन करा कुन ते मेटल सतन रिएक्शन करान छु, अति क्या छु बनान। ठीक से अत में छ वुचुन। सो when acids, they react with metals, they form a salt and hydrogen gas. When acids react with metal, they form salt and hydrogen
गैस। इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है दैट इज जिंक, ठीक है। जब ये एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ये अत रिएक्शन करन, यह बनावान अत मज ZnSO4 प्लस H2 गैस, H2 गैस। दिस इज जिंक, you go zinc. This is sulfuric acid, sulfuric acid. When they react with each other, they form zinc sulfate, and hydrogen, and that is gas. Hydrogen gas is formed, ठीक है। ये एक पहली एग्जांपल हुई इसमें। दूसरी अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है हमारे पास। एल्युमिनियम जब रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाता है इसमें, ये बनाता है AlCl3 प्लस 3 टाइम्स H2, ठीक है। अगर हम बैलेंस करेंगे इसको तो ये आएगा इधर 2 टाइम्स Al और ये आएगा इधर 6 टाइम्स HCl, ठीक है। सो व्हेन aluminum is a metal, when it reacts with an acid, this is a hydrochloric acid. This is hydrochloric acid. When this aluminum reacts with hydrochloric acid, it forms AlCl3, that is aluminum chloride. Aluminum chloride and hydrogen gas. ठीक है। So this is also a salt. Zinc sulfate is also a salt. Aluminum chloride, it is also a salt, ठीक है। So when a metal reacts with acid, it forms a salt and hydrogen gas. थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिंक है हमारे पास, जिंक मेटल, इट रिएक्ट्स विथ HCl, तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। अगर हम बैलेंस करेंगे इसमें तो ये आएगा इधर 2HCl, ठीक है। सो जिंक इट्स अ मेटल, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एन एसिड, this hydrochloric acid, when zinc reacts with this hydrochloric acid, it forms zinc chloride, and this zinc chloride, it is a salt, and also hydrogen gas is formed. So in the first chemical property is reaction with metals. So when any acid reacts with a metal, it forms a salt and a hydrogen gas. This is enough for today.